गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. सगळ्यांना आवाज येतोय माझा? ओके, थँक्यू. ठीक आहे. तर आज संतोष सर बिझी आहेत, तर त्यामुळे आपण शंकर सर, येस सर. सॉरी, जस्ट मी घरी आलोय, त्यामुळे तुम्हालाच लेक्चर कंटिन्यू करायचंय. मी जस्ट मुलांना तेवढं सांगतो आणि देन यू कॅन कंटिन्यू. येस सर, शुअर. सी, आय जस्ट लँडेड होम, सो बिकॉज आय गॉट सम इश्यू, टायर वगैरे खराब झाला होता अँड देन आय कुड नॉट कम इन टाइम. सो आय जस्ट इन्फॉर्म लिटिल बिट some few hours back that I may not be able to make up. So sir will be taking maths too. Probably tomorrow also will be some math session and then I may continue day after tomorrow or so. Okay, तर आपण ते बघूया. तुमचं syllabus is the main thing and the continuity of the syllabus will be maintained because mostly one subject will not be taught by multiple teachers. So कारण आतापर्यंत तुमचं अप्रुव्हल ओकेच होतं. So till date whatever teacher have gone through these particular phases of teaching will be continuing and few others will be joining in as and when required. So today Shankar sir will be taking your maths 2. Shankar sir will be giving you homework. He has already added you to the maths 2 subject. So now you need to be little serious about studies. There will not be due date for any of the homework, but then we expect that you should finish it before the next session goes on. Okay, ठीक है sir, thank you so much for helping me out. Bye bye. येस सर, बाय. Bye. सो मला परत एकदा सांगा की माझा आवाज येतो सगळ्यांना व्यवस्थित? एम आय ऑडिबल टू एव्हरीवन? प्लीज कन्फर्म वन्स. ओके, थँक्यू. ठीक आहे. So in the last lecture, so in the last session, we have seen what is complex number, what is imaginary number, बरोबर? And also we have seen algebra of complex numbers, correct? In it, I think we have seen addition, subtraction, and multiplication. The division is remaining, correct? Also we have seen powers of I, ठीक आहे? So I hope तुम्हाला ही जी I ची पॉवर आहे ती स्प्लिट कशी करायची याची तुम्हाला आयडिया आलेली असणार, बरोबर? तुम्हाला I ची पॉवर स्प्लिट करता येईल आता या क्लासमध्ये? कॅन यू स्प्लिट द पॉवर ऑफ I? एव्हरीवन प्लीज गिव्ह मी द रिस्पॉन्स. Am I audible, students? Okay, if I am audible to you, so you have to give response. ठीक है? Everybody should give response. संकल्प, समीर, यस, ठीक है. तो बताओ मुझे, क्या आप इस क्लास में आई की पावर स्प्लिट कर सकते हो या फिर भूल गए? यू रिमेंबर इट और यू हैव फॉरगॉटन इट? आई नीड क्विक रिस्पॉन्सेस. ओके, रिमेंबर, वेरी गुड. देखो, जैसे मैं कोई क्वेश्चन पूछूं आपको जल्दी से आंसर देना है, ठीक है? यू हैव टू गिव क्विक रिस्पॉन्स सो दैट आपका और मेरा दोनों का टाइम खराब नहीं, वेस्ट नहीं होगा, ठीक है? चलो, ठीक है. सो इस क्लास में वी विल गो अहेड विथ द डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू परफॉर्म डिवीजन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर. सो इस क्लास में ऐसा कोई है, शायद अमीशा सावंत जो है उन्होंने लास्ट क्लास मैथ्स का अटेंड नहीं किया था, करेक्ट? आपने अटेंड किया था क्लास? अमीशा सावंत, हैव यू अटेंडेड द लास्ट क्लास? ओके, ठीक है. चलो, तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है ये पता होना चाहिए. उसके अलावा आपको आगे का जो अलजेब्रा है वो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है? सो इसके लिए मैं शॉर्ट में 1 मिनट में आपको बता देता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है? कोई भी नंबर इन द फॉर्म ऑफ a plus ib, any number in the form of a plus ib is called complex number if a and b, these two are real numbers and I is called as a imaginary number. Okay, I is called as a imaginary number. And what is the value of I? Please everybody let me know in the chat box, what is the value of I? Iota.
What is the value of iota? Root of -1. Okay, minus of √1 नहीं संकल्प, root of -1 is more correct. ठीक है, चलो. So I square is -1. So you have to remember this. And if z is a complex number such that a plus ib, then a is a real part of that complex number and b is the imaginary part of that complex number. Okay, a is a real part and b is a imaginary part. So this is all about summary of complex number. ठीक है, तो उसके बाद में हमने एडिशन देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा एंड सब्ट्रैक्शन भी देखा. ठीक है, सो वी आर नाउ परफॉर्मिंग डिवीजन. सपोज वी हैव गिवन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दैट इज z1 एंड z2. ठीक है, z1 इज इक्वल्स टू a प्लस ib एंड z2 इज इक्वल्स टू c प्लस id. ठीक है, एंड इसमें सच दैट z2 इज नॉट इक्वल्स टू 0. z2 जो है ये 0 नहीं है. We have to remember this condition. ठीक है, so what we have to do, we have to perform division. We have to divide z1 by z2. Okay, so see what we are going to do. Simply write it in the form of z1 by z2. Okay, and multiply and divide with the complex conjugate of denominator. Okay, denominator में जो कोई भी complex number रहेगा उसके complex conjugate से हमें क्या करना है, उसको उस जो इक्वेशन है उसको हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है. इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मली रैशनलाइजेशन कहते हैं. ठीक है, सो वी हैव टू डू दैट. सो व्हाट हैपन, सी a प्लस ib मल्टीप्लाइड बाय c माइनस id. देखो अभी डिनोमिनेटर क्या है, c प्लस id इज डिनोमिनेटर. ओके, सो इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज c माइनस id. करेक्ट. सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग विद द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर. Then after solving all this, we will get result like this. See, this is our final result. Okay, what it is, ac plus bd divided by c square plus d square, that is a real part of the our result, and ac minus bd divided by c square plus d square, and I is written here, that means it is a imaginary part of our result. Correct. So see, in the real part what it is like ac plus bd. Okay, and in the imaginary part it is ac minus bd. So what we have to remember, here it is plus, here it is minus, and whole thing is similar. Okay, it is similar to it is similar in both the cases. Now we will take an example and then we will solve it. Okay, so see, suppose here z1 is 3 plus 2i. Okay, and z2 is 1 plus I. These two are given complex numbers and we have to perform division on them. Okay, so what we are going to do, we are multiplying and dividing that given sum with the complex conjugate of denominator. Okay, what is complex conjugate of this? That is 1 minus I. So if you multiply this, okay, if you multiply this, see, 3 multiplied by 1, that is 3. 3 multiplied by minus I, that is minus 3i. Okay, 2i multiplied by 1, that is 2i, and 2i multiplied by minus I, that is minus 2i square. Okay, and see, in one bracket it is a plus b, in another bracket it is a minus b. So the result is going to be a square plus b square, or a square minus b square. What it is, tell me. If I write it like this, a plus b, okay, and in another bracket that is a minus b. So what is the result? A square plus b square, or a square minus b square. What it is? It is plus or minus? Okay, everybody is getting problem with my voice. बाकी लोगों को मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? Are you facing the problem with my voice? Students, मेरी वॉइस आपको अच्छे से आ रही है? ओके, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम लिख दिया एक ने, चलो ठीक है. सो सी, if there is a plus b in one bracket and a minus b is in another bracket, then it is a square minus b square. Okay, so for this example, see, 1 plus I is our a plus b. Okay, and 1 minus I is our a minus b. ठीक है,
So its multiplication is going to be a square minus b square. 1 multiply a. What is our a? A is 1. A square, that is 1. Written here, correct? What is our b? B is I, correct? And b square is minus 1. But it's minus given here. So minus minus becomes plus and it is plus 1. Okay, सबको समझ में आया ये plus 1 कैसे आया, ये समझ में आया? प्लस 1 कसं समजलं का तुम्हाला? यस, गुड, व्हेरी गुड. ठीक है. So simplified. See, 2i square. I square is minus 1. So minus 2 multiplied by minus 1, that is that it becomes plus 2. Okay. So this 3 and this 2, that becomes 5, and minus 3i plus 2i, that is I, and 1 plus 1 is 2. So our division is like this: 5 by 2 minus 1 by 2 I. This is a real part and this is imaginary part. Okay, so this is how easy the division is. Correct? समझ में आया सबको अभी? Understood the division? Okay, good. See, there are few properties of division. What are those? See, 1 by I is equals to minus I. Okay, you have to remember this. 1 by I is equals to minus of I. 1 plus a plus ib. देखो, 1 divided by a plus ib. 1 divided by a plus ib. तो हमें क्या करना है? उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट न्यूमरेटर में लिखना है और a square plus b square डिनोमिनेटर में लिखना है. This is also one property we have to remember for the division. Okay, so I don't think कि हमें कोई अभी solved example लेने की जरूरत है, या फिर we should take it. Tell me, because we have a big exercise here, and if you are facing any problem with any kind of example from this exercise, I will solve it for you. Okay, so please tell me, solved example or exercise? I think we should go with exercise, because you will find it easy to deal with this solved examples. Yeah, exercise, correct. So simplify. First question is simplify, and I think it is very simple. Correct. All these two questions are simple, so I'm not getting into it. Correct. Write the conjugates of the following complex number. It's nothing hard. What we have to do? We have to just reverse the sign of imaginary part. Correct. So write the complex conjugate for this number. Amisha, you are new here. You have to concentrate more. Okay. Complex conjugate में हम क्या करते हैं? We just reverse the sign of. Okay, 3 minus I. देखो, इन लोगों ने तो आंसर भी लिख दिया. This is complex conjugate or simply conjugate of this number. Okay, what we have to do? We have to just reverse the sign. What is the complex conjugate of this number? Okay, sorry, this number. Second one. Write it quickly. See, minus जो है वो 3 के बाद में है, ठीक है? So whether it is plus, it is minus, it doesn't matter. Okay, so no, Sankalp, its complex conjugate should be 3 na. Its complex conjugate should be 3, because here we do not have imaginary part. Okay, what we do in complex conjugate, we just reverse the sign of complex conjugate, imaginary part. We don't have imaginary part, so we'll put the real part as it is. That's how easy it is. So the complex conjugate is 3 only. Okay, it's 3. Yeah. Find A and B. Can you solve this? Find A and B. I think you will be able to solve this. How? See, this is imaginary part. Okay, this is imaginary part. So what is 2A is equals to what? Tell me. Write with me in the chat box. Yes, Atharva Sherke. 2A is equals to 6. So A is equals to what? A is equals to 3. Good. So see, अभी हमने imaginary part की मदद से A ढूंढ लिया, ठीक है? अभी A plus 2B is equals to how much? A plus 2B is equals to how much? A plus 2B is equals to how much? A plus 2B is equals to 4. A plus 2B is equals to 4. And what is the value of A? A की value है 3. So 3 plus 2B is equals to how much? It's 4. Correct. And 2B is equals to how much? 1. Correct. So B is equals to 1 by 2.
Everybody understood? A is equals to 3 and B is equals to 1/2. जिसको जिसको समझ में नहीं आया प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, स्पेशली अमीशा, बिकॉज यू आर न्यू टू दिस क्लास. ओके गुड, चलो किसी को कोई डाउट नहीं है, गुड. सो बाकी सारे जो एग्जांपल्स है यू कैन सॉल्व इट, आई थिंक करेक्ट. I don't need to take all of them. So fourth question, express the following in the form of a plus ib, where a and b are real numbers and I is imaginary number, that is root of -1. State the values of a and b. What we have to do, we have to perform multiplication here, nothing but the multiplication. Okay, यहाँ पे multiplication करना है, यहाँ पे division करना है, यहाँ पे भी division, यहाँ पे भी division. थोड़ा सा expansion का formula हमें यूज करना पड़ेगा a square b square का, ठीक है. उसके बाद में यहाँ पे भी हमें एडिशन करना है और यहाँ पे भी एडिशन है और इसके अंदर एक मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है. सो इट इज क्वाइट लेंथी एग्जांपल बट इट इज इजी वन, करेक्ट. it is not that hard, it is only lengthy, so we are not getting into it, because if it is not hard you can solve it. Even if it is hard you will be able to solve it. Okay, so show that this is a real number. See, to show that this is a real number, what we have to do, we have to use the formula of which formula, a cube plus b cube का formula हमें यूज करना पड़ेगा, बराबर. आई थिंक यू हैव लर्न दैट formula in 8th standard, 9th standard and 10th standard also, correct. Formula for a cube plus b cube, what it is, I think it is a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube, something like that, it correct. This is the formula for a plus b whole cube. No, sorry, yes, correct. Am I correct? Okay, good. ठीक. So find the value of this. What we have to do, we have to just multiply, we have to just perform multiplication, ठीक है. So this is for your practice, you have to perform this. अब ये देखो, evaluate the following. आपको यहाँ पे क्या करना है, you have to split the power of I, जो कि हमने लास्ट क्लास में सीखी है. So quickly tell me which one I should take. Which one should I take? First, second, third, fourth, ninth, eighth, which one? Okay, somebody is writing 8th one. Okay, Atharva is writing 8th one. Others, बताओ कौन सा लेना है? Which one you find hard? Okay, 8th one. Good. See, देखो, अभी हमें क्या करना है, I की पावर यहाँ पे कितनी है? 40 है. I will zoom it for you, so you will be able to see it properly. I raised to 4. इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? I raised to 4 raised to 10 लिख सकता हूं कि नहीं? करेक्ट. करेक्ट. सो इट्स आंसर इज गोइंग टू बी 1. ठीक है, I raised to 40 इज 1. ठीक है, अभी इसको हमें स्प्लिट करना है. क्या करना है? स्प्लिट करना है. सो इस 50 को क्या करेंगे हम? 4 से डिवाइड करेंगे. सो 4 डिवाइडेड बाय 50, दैट इज 12. आई थिंक I raised to 4 raised to 12. I raised to 4 raised to 12 multiplied by I square. करेक्ट. तो ये होगा 1 और ये होगा -1. सो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर विल बी 0. करेक्ट. नहीं, 1 होगा, -1 होगा. 1 multiplied by -1, it will be -1. Correct. So this is -1. So these two we have solved. Now for I raised to 60, it is going to be 1 only, and this is going to be +1. Correct. So for splitting this, I raised to 4. See, I raised to 4 raised to 7. Correct. 7 4s are 28 and 28 अभी बचा कितना? 2. सो एयर I square. करेक्ट. सो यहाँ पे भी क्या होगा? -1 होगा. So this +1 -1 cancels, this +1 -1 cancels. The result is 0. What is result? What is the answer?
अंडरस्टूड? इट इज 0, या यू हैव टू राइट इट. गुड गुड गुड. चलो सब लोग, अमीशा यू आर नॉट राइटिंग आंसर्स. ठीक है चलो. और कोई? देखो, शो दैट इज अ रियल नंबर, यू कैन सॉल्व इट. डू नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है. तुम्हें क्या करना, फोर्थ सिक्स्थ वन भी सॉल्व करना है, ठीक है. वेट, वेयर इज सिक्स्थ वन? ओके. See, now Amisha, I will explain this in detail for you. Sixth one, okay? Everybody concentrate. 1 by I raised to 58. Let it be as it is. We'll just consider this as a I raised to 58, okay? So I will show you in the another tab so that you will find it easy to deal with it. I raised to, wait. Okay. What is our problem? I raised to 58. ठीक है. 1/58 को हम भूल गए. We just write I raised to 58. Now divide this by 4. Divide this by 4. What you will get? You will get I raised to, divide this by 4. What is the answer? 14.5. Is it? Amisha, concentrate. Okay. What we are doing? We are dividing 58 by 4. We got the answer 14.5. Okay. Forget this 0.5. Just remember 14. ठीक है. 14 को remember करना है. और कैसे लिखना है हमें? I raised to 4 raised to 14. Good. So अभी 14 से हमें 4 को multiply करना है. तो कितना आएगा? 14 4 जा. Amisha, you will write the answer. 14 4 जा. 14 4 जा कितना? 14 वर जा 14, 14 2 जार 28, 14 3 जार 42, 14 4 जार 56. कितना आया? 56 आया. करेक्ट. हमें चाहिए कितना? 58 चाहिए. बराबर. we need 58. So what we will do? We will simply multiply this by I raised to 2. Okay. So this is how we split the power of I raised to 58 into it. ठीक है. This is how we split the power. I raised to 58 को हमने इस तरह से लिखा. और हमें सबको पता है कि I raised to 4 is 1. ठीक है. And 1 raised to anything is 1. Correct. So for this whole term, answer is going to be 1. Okay. And this is I square. I square is -1. Okay. I square is -1. So 1 multiplied by -1, that is going to be -1. So final answer of this is I raised to final answer of I raised to 58 is -1. Correct. -1 आया. यहां तक समझ में आया? तो अभी चलो बैक टू दिस अवर एग्जाम्पल. सी, यहां पे हमें -1 लिखना है. 1 डिवाइडेड बाय -1, व्हाट विल बी द आंसर? दैट विल बी -1. वेरी गुड संकल्प. ठीक है. ओके, गुड गुड. अथर्व, समीर, गुड. इट इज गुड. अमीशा, वेरी गुड. समझ में आया अभी? गुड. चलो. तो देखो, ये एक्सरसाइज जो है ये बहुत बड़ी है. ठीक है. हम लोग अगर इसको लेते लेते जाएंगे सो वी विल मतलब हम हमारा टाइम थोड़ा सा वेस्ट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ने के लिए आए. ठीक है. एक्सरसाइज आपको घर पे सॉल्व करनी है. यू ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी इन द क्लास. ठीक है. सो बाकी सारे जो क्वेश्चंस है वो आप लोग अच्छे से आराम से घर पे सॉल्व कीजिए. और जो कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास. ओके. So we will quickly move to the next topic, that is our square root of a complex number. अभी हमारा जो रियल नंबर्स रहते हैं, रियल नंबर्स के हम स्क्वायर रूट निकालते हैं. बराबर. व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 14? अगर मैंने बोल दिया आपको, सो यू विल क्विकली टाइप 7. करेक्ट. स्क्वायर रूट ऑफ 49 is 7. But what if I ask you, what is the square root of 2 plus I? Okay. 2 plus I का स्क्वायर रूट क्या है? If I ask you what is the square root of 2 plus I, so it will be difficult to find the square root of complex number. Okay. So here is one technique. Consider z is equals to x plus iy is a complex number. This is any complex number, and we have to consider that root of x plus iy is a plus ib. ठीक है. root of x plus iy is a plus ib. अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा. यू हैव टू रिमेंबर दिस. इन इट
A and B are real numbers. Okay, on squaring on both sides we get x plus iy is equals to a plus ib whole square. Correct. So if we expand this, that we will get a square plus 2ab minus b square. No, it will be like a square plus 2ab plus b square. Correct. Correct. a plus b whole square is equals to a square plus 2ab plus b square. करेक्ट बोल रहा हूं ना मैं फॉर्मूला? अगर करेक्ट बोल रहा हूं तो यस कहने का चैट बॉक्स में। आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? यस, गुड 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 एवरीवन। समीर, अथर्वा, अमीशा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वेरी गुड संकल्प। सी, अभी यहाँ पे हमारे b के साथ में i भी है। करेक्ट है, हियर i इज ऑल्सो देयर। सो ये जो हमारा b स्क्वायर है दैट इज गोइंग टू बी माइनस b स्क्वायर। Why? Because of this I square is minus 1, we know that. So b square is going to be minus 1, sorry, minus b square. So our expansion is a square plus a square minus b square and 2abi. Okay, so this is the square root of that number. ठीक है, so this is a real part and this is imaginary part. Okay, now see, we will see one example, then I will give you one problem to solve and you will find out the square root of that number. Okay, see, 6 plus 8i, we have to find square root of this complex number. So we considered like root of 6 plus 8i is a plus ib. Okay, squaring on both sides we get, similarly we have squared on both sides. What we have got, real part is equals to a square minus b square. 6 is equals to a square minus b square. Correct, 6 is equals to a square minus b square और 2ab is equals to 8. ये दो टर्म्स हमें मिली. करेक्ट. सो a is equals to 4 by b. a is equals to 4 by b. कैसे मिला हमें? ये 2b इधर चला गया, सो 8 divided by 2b that is 4 by b. सो हमने क्या किया, a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी which is in the form of b. So we got the value of b, that is, what is the value of b? We have got the value of b as minus 8 or 2. Okay, so b is a real number. B is a real number. That's why b square cannot be minus 8. B square cannot be minus 8. So b square is 2i and b is plus or minus 2i, sorry, plus or minus 2. So we have got the value of b and with the help of value of b we found the value of a also. ठीक है, so अभी इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. What we will do, we will just take this example and we will solve it. ठीक है, सब लोग सॉल्व करेंगे, आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व करेंगे. अभी मैं व्हाइट बोर्ड पे जा रहा हूं, आप सब लोग नोटबुक अगर आपके साथ में है तो लिख लो वो एग्जांपल एंड ट्राई टू सॉल्व इट. ओके, वी विल सॉल्व टुगेदर. तुम लोग भी सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करूंगा. व्हाट इज द एग्जांपल? आई एम राइटिंग इट ऑन द व्हाइट बोर्ड. You won't be able to see as of now. I will show you. 3 minus 4i. Correct? This is our example. चलो अभी सब लोग मेरे साथ रहो. अगर मेरी आवाज आपको नहीं आ रही है सो प्लीज लेट मी नो. ठीक है, क्या करना है हमें? हमारा जो रियल पार्ट रहता है, रियल पार्ट इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू क्या रहेगा? 3 रहेगा, बराबर. और 2ab क्या रहेगा? 2ab इज व्हाट इज 2ab? बताओ मुझे. 2ab is equals to what, students? 4i नहीं रहेगा. See, 2ab is equals to minus 4 only. minus 4 i नहीं. i is the imaginary number. ठीक है, it is i का कोएफिशिएंट जो रहेगा that we have to take, that is minus 4. ओके, सो अब क्या करेंगे? a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू होगी माइनस 2 बाय, सॉरी a की वैल्यू नहीं, b की वैल्यू. इट इज गोइंग टू बी वैल्यू ऑफ b माइनस 2 बाय a. समझ में आया? अंडरस्टूड? b की वैल्यू हमें क्या मिली? ये मिली माइनस 2 बाय a. सो माइनस 2 डिवाइडेड बाय
ए माइनस बी की वैल्यू हमें क्या मिली, सॉरी सॉरी सॉरी, इट शुड नॉट बी लाइक दिस, इट शुड बी ए स्क्वायर ओनली ना, ए स्क्वायर माइनस -2 अपॉन ए, करेक्ट, स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, ठीक है. सो इफ वी सॉल्व दिस नाउ, आई विल वाइप दिस आउट बिकॉज वी आर डन विद दिस. चलो ठीक है, ए स्क्वायर एज इट इज -2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 स्क्वायर होगा, बराबर, दैट इज 4. एंड ए स्क्वायर इज व्हाट, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, 3, correct. See, now what we are going to do, what we have to do, we have to multiply whole term with a square. a square से हमें पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है. देखो अभी if I multiply this whole with a square, so it is going to be a raised to 4, ये होगा -4 इज इक्वल्स टू ये होगा 3a स्क्वायर, बराबर, करेक्ट. ओके गुड. चलो, सो अभी क्या करना है, a रेस टू 4 माइनस 3ab a स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है. सो अभी हम क्या करेंगे, a स्क्वायर की जगह पे x रख देंगे फॉर एन इंस्टेंट और p लिख देंगे. a स्क्वायर की जगह पे विल राइट a स्क्वायर इज इक्वल्स टू सपोज p, ठीक है, सॉरी, will write a square is equals to p. Okay, so what it is p square, 3p minus 4 is equals to 0. Okay, so solve this quadratic equation and find out the value of p. Can you solve it? If you cannot solve it, I will solve it for you, but try solving. What is the value of p? We are not going with the method given in textbook. Okay, we are going with the different method. 4 or 1. Okay, let's try 4. If p square, if what the value of p is 4, ठीक है, 4 3s are 12 and 4. okay, ठीक है, संकल्प ने फाइंड आउट किया है. देखो 4 और -1 दैट इज वैल्यू ऑफ p, ठीक है, वैल्यू ऑफ p इज दैट इज a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 और -1, correct. So we know that a square is और a is a real number, ठीक है, और a का स्क्वायर कभी भी माइनस नहीं होगा. so that's why a की वैल्यू a स्क्वायर की वैल्यू -1 कभी भी नहीं रहेगी, बिकॉज a इज a रियल नंबर, ठीक है. इमेजिनरी नंबर की रूट स्क्वायर की वैल्यू माइनस हो सकती है, ठीक है. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर, a स्क्वायर की वैल्यू है 4, तो a की वैल्यू क्या हुई, a की वैल्यू अगेन प्लस और -2, करेक्ट. अगेन इट कैन नॉट बी माइनस, सो वैल्यू ऑफ a इज 2, बराबर. a की वैल्यू अभी हमें 2 मिल गई. सबको समझ में आया a की वैल्यू 2 कैसे मिली. अभी हमारे पास एक एक्सप्रेशन था, देखो क्या एक्सप्रेशन था हमारे पास, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर is equals to 3. This was the expression. Put the value of a, that is a 2, so it becomes 4 minus b square, 4 minus b square, correct, is equals to 3. so minus b square is equals to -1, b square is equals to 1,
b इज इक्वल्स टू 1। समझ में आया? a की वैल्यू आई हमारी 2, b की वैल्यू हमारी आई क्या क्या आई वैल्यू b की 1 आई। अभी खत्म नहीं हुआ है। एवरीबडी राइट द वैल्यू ऑफ a एंड b। सब लोगों ने चैट बॉक्स में a और b की वैल्यू लिखनी है। मैं देखना चाहता हूँ किस किस को याद है। ऐसे लिखो जैसे संकल्प ने लिखा है ना, a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू, ऐसे लिखना है सबने। गुड अथर्व। ठीक है, और a और b की हमारे पास वैल्यू है, लेकिन हमें क्या करना था, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना था। बरोबर, स्क्वायर रूट का फॉर्म क्या होता है? स्क्वायर रूट का फॉर्म होता है a प्लस आई बी। ओके, सो 2 प्लस I, this should be the square root. Let's see, is it the square root? Minus 2 plus I, or 2 plus 2 minus I, this is square root. Okay, we have made a mistake with the value of A, I think. Okay. ओके ओके, ठीक है, हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, लेकिन इफ यू, आपको प्रोसेस समझ में आ गई है, देन वी कैन मूव अहेड। ठीक है, आपको प्रोसेस समझ में आई कि किस तरह से करना है। ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गया, मैथमेटिकली थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, इट्स ओके, लेकिन आपको प्रोसेस समझ में आई कि हमें किस तरह से करना है। ओके, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। चलो ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। अ पॉलिनोमियल इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट्स हैज एटलीस्ट वन रूट इन C, or a polynomial equation with complex coefficient of degree n has n complex roots। ठीक है, यहां पे जाने से पहले, ओके ओके संकल्प, you have a doubt, so you can turn on your mic, please turn on your mic and you can ask the doubt, or you can write it in the chat box also, whatever you feel like. So now we did a square equals to 4. So why can't Okay, a be minus 2? ab Because a minus is 2. not the imaginary part. It's a real number. So why can't it be minus 2? Sorry, I didn't understand your doubt, please write in the chat Sir, box. in I the can't, earlier question. can you please write in the chat box, Yeah. because you're, yeah. Okay, Sankalp is having one doubt. We will solve that doubt and then we will see this formula. Okay. A square is equals to 4. Okay, we have got A square is equals to 4. Okay, good. Then, so why can't we write A is equals to minus 2? Yes, we can write, yes, Sankalp. We can write A is equals to minus 2 also. No doubt, because minus 2 is also a real number. No issues. ठीक है, इसीलिए तो देखो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्या किया गया है कि एक ही दोनों वैल्यू को कंसीडर किया गया है। ठीक है, जैसे कि अभी 49 का जो स्क्वायर रूट है दैट इज प्लस और माइनस 7, करेक्ट, +7 भी स्क्वायर रूट है और -7 भी स्क्वायर रूट है, मतलब 2 स्क्वायर रूट है। सो इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर में भी 2 स्क्वायर रूट होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे उन्होंने क्या किया, देखो, फॉर a इज इक्वल्स टू 2, फॉर a इज इक्वल्स टू 2 को b की वैल्यू फाइंड आउट की, दैट इज -1। ठीक है, सो दे राइट इट लाइक दिस इज फर्स्ट स्क्वायर रूट, sorry, yes, it's square root, correct. And for a is equals to -2 also, they have found out the value of b. Okay, and they have written another square root, that is -2 plus I. So there are 2 square roots here. Okay, yeah, your doubt is correct, and we can write a is equals to -2, no issue. But we cannot take a square is equals to -2 or any minus value. Okay, very good doubt. Good, chalo, ठीक है। Are you satisfied, Sankalp? ओके, नो प्रॉब्लम, चलो ठीक है। सी देखो, संकल्प का डाउट जो है बहुत अच्छा था कि सर हम a इज इक्वल्स टू -2 क्यों नहीं ले सकते। ठीक है, गुड। सो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। अभी हमारा जो पहला एग्जांपल था जो कि हमने क्लास शुरू होते वक्त लिया था, बराबर,
that is x square plus 1 is equals to 0 है, so why cannot we find out square root of it, or why cannot we find out the value of x? Because there is no such value in a real number set that can represent the answer. ठीक है, so for that this formula is there. ठीक है, अभी हमें अगर उस फॉर्मूला में भी मतलब वो जो हमें दिया गया था एग्जांपल, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 is equals to 0, and if you have been asked to find out the value of x, so we can find out the value of x with the help of this formula very easily. ठीक है, and that value is going to be in imaginary numbers, like imaginary format or complex number. Okay, so what is this formula? I hope you remember this formula. This is also called Sridharacharya's formula. Okay, the Indian mathematician Sridharacharya has found this formula. Remember this. Okay, so for any quadratic equation, suppose the quadratic equation is ax square plus bx plus c is equals to 0. Okay, and a, b, c, these are real numbers and a is not equals to 0. If a is equals to 0, then it is no more the quadratic equation. It is going to be the linear equation, correct? So a has to be a natural number, or it can be integer except 0. It cannot be 0. Okay, so for this kind of expression or equation, if you want to find out the value of x, so this is the simplest of formula, that is minus b plus or minus root of b square minus 4ac divided by 2a. We have to put the value of a, b and c in this formula, and we will directly get the value of x. Okay, have you learned this formula in previous standard? Okay, good Sankalp. ठीक है, good Atharva. Okay, Amisha, good. So solve this example. They're asking us to solve this example, that is x square plus x plus 1 is equals to 0. The main part here is we need to find out the value of a, b and c. If we are able to find out the value of a, b and c, rest is the mathematical calculation. Okay, there is nothing logic in it. So what is the value of a, b and c here? A is equals to 1, b is equals to 1 and c is equals to 1. Just put the values of a, b and c in the formula and we will get the value of x. Correct, as simple as that. Chalo, so we are not solving that particular example. Okay, it is very easy one. So the another one, that is x square minus in bracket 2 root 3 plus 3ix plus 6 root of 3i is equals to 0. So यहाँ पे हमें क्या करना है? What we have to do, we have to just find out value of a, b and c. a is equals to 1 बराबर, b is equals to minus of I in bracket 2 root 3 plus 3i. ठीक है, so see here we are taking I as well. Okay, we are taking I as well. We don't know this is a complex number or which number. We are just solving a quadratic equation. Okay, we don't know about complex numbers. We are considering this whole term including this minus as a b. Okay, and the third term, that is c. So we have found out the value of a, b and c. We'll just simply put the values of a, b and c in this formula and we will calculate the answer. So we are going to get result like this. Okay, so this is how we solve the quadratic equation. Now find the value of x cube plus x square plus 2x plus 10 when the value of x is equals to 1 plus root of 3i. See what we are going to find out here. हमें यहाँ पे क्या find out करना है? हमें value find out करनी है. ठीक है, we have to find out the value. We don't need to find out the value of x because value of x is already given. We just have to put the value of x and we have to solve that example and find out the numerical value of that example. Correct? Can you solve it? I think it is very easy and you can solve it easily. I don't think we should need to, or we need to take it. Students, response. Can you solve it? Yes or no? Okay, Samir can solve, Atharva can solve, Sankalp also can solve. Okay, Amisha also can solve. Yeah, no problem. Chalo, theek hai. So see, fourth one, if x is equals to minus 5 plus 2 root of minus 4,
find the value of x raised to 4 plus 9x cube plus 35x square minus x plus 64. Again the same example. What we have to do, we have to just put the value of x and we will get the answer. Okay, very easy. What we have to remember here is, what is the important part, what we have been asked to solve such type of examples. ठीक है, इसमें ये लोग हमें टेस्ट क्या करना चाहते हैं, what they are going to test about us, they are going to test about us that whether we know that कि my I square is equals to what is the value of I square, what is the value of I square, -1. Very good. What is the value of I cube? What is the value of I cube? I'm asking I cube. It is minus I. Okay, it is minus I. Very good. No, Samir, it's not -1, it is minus I. Okay. Then what is the value of I raised to 4? 1. Okay. What is the value of I raised to 5? Yeah, minus I. So this is how the pattern is going to be repeated. ठीक है, ये पैटर्न जो है वो रिपीट होता जाएगा. They are just testing this कि whether we know this or not. अगर ये सब हमको पता है, then it's nothing new in it. ठीक है, इसमें नया कुछ भी नहीं है. They are just testing this, your mathematical ability to solve such type of expressions. Okay, now the exercise 1.2. Exercise 1.2. Find the square root of the following complex numbers. ठीक है, अभी स्क्वायर रूट को हमें क्या करना है, रिवाइज करना है. This is a real part. What is the real part of this sum? I'm asking real part. What is the real part of this sum? -8. Correct. What is the imaginary part of this example? Imaginary part. That is -6 only. It is not -6i. Okay, it is -6 only. Good. ठीक है. So for finding the square root, what is the formula for real part? Real part का formula क्या है? A square minus B square is the formula for real part. Correct. So that A square minus B square is going to be -8. Correct. And 2AB is going to be -6. Correct. 2AB is going to be -6. So this is how we solve the example and write the square root in the form of A plus IB. Okay, we find the value of A and B and we just put it and we find the square root of that example or equation. Okay, so I think you will solve this. Solve the following quadratic equations. Okay, we will solve the third one. Okay, we will solve this third example. Sorry, sometimes it just happens. I'm not used to using all this whiteboard and all. Okay, so shall we take this example, third one? Shall we take it? Okay, chalo, everybody is saying yes. Sankalpa? Okay, good. So please tell me the example. I am opening whiteboard. Okay. Atharva, you can turn on the mic and tell me the example because I am not watching the screen right now. Turn on your mic and tell me the example. 3x square. Wait, just let me write it. It takes time to write on computer. 3x square minus 7x minus 7x plus 5 plus 5 that is equal to 0. Is equals to 0. Thank you very much. Okay. See, I've written this example. Okay. So what is the value of A? That is -3, B is -7 and C is 5. Okay. So X is equals to minus B. Barabar, minus B is 7 plus or minus B square minus 4AC. B square is 49. Correct. And 4AC is 60. Correct. 49 minus 60. Is it? 4AC is 60 or not? Verify.
Okay, 4ac is 60. Now see, you are saying 2a, that is 6, correct? So 7 as it is, plus or minus, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आएगा -11, ठीक है? सो -11 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, I रूट ऑफ 11 बराबर डिवाइडेड बाय 6, correct? So what is the value of x? 7 plus I root of 11 by 6, or 7 minus I root of 11 by 6, correct? Is it the value? Okay, root 11 I did not understand. See, 49 minus 60 is how much? It is -11, na? Correct? 49 minus 60 is -11, and -11 is nothing but root of I, root of -1 is I, correct? Root of -1 is I. So we have taken out this I as a -1, correct? We can write this like this, okay? 49 minus 60, we can write 11 multiplied by root of -1. Okay, I'll just do this. Okay, see, correct? Can I write like this? So this becomes 1, sorry, this becomes I, and this remains as it is. So our final answer is this. These are the two values of x, correct? Understood? चलो ठीक है, अभी देखो आपको क्या करना है, आपका होमवर्क क्या रहेगा, अभी आपके जो गूगल क्लासरूम है उस पर आपका होमवर्क मैं अपलोड करूंगा, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है? सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, you are going to solve exercise 1. Okay, Sankalp, please write your doubt, Sankalp. Sankalp, yes, I think you are writing. Write it, take your time. Sir, it was plus or minus, both of them. See, 7 minus I is also the value of x, and 7 plus root 11 is the value of x. Both are the value of x, because we are finding the square root, yeah, square root is going to be positive as well as negative. Okay, good. So I think it is enough for today, and you will solve all the examples given in the practice set 1.1 and 1.2 as your homework. And if you have any kind of a doubt, then if you have been added to the Google Classroom, have you added to the Google Classroom of Maths 2 class? आप लोगों को Maths 2 क्लासरूम का इनविटेशन आया है? किस किस को आया है? अथर्व को आया है इनविटेशन Maths 2 के क्लास का, गूगल क्लासरूम ऐप पे, ठीक है? और किसको आया है? संकल्प, हैव यू गॉट द इनविटेशन? अमीशा, have you got the invitation for? Okay, please check it. Okay, please check it, and you can post your doubts regarding this practice 1.1 and 1.2 in advance on that Google Classroom app, okay? So that I will get time to find the answers for them, okay? You will post every doubt. What you have to do, you have to write in private comments like exercise 1.1 example 3rd, I didn't understand, okay? So you have to put comment like this so that I will understand, okay? This is how we are going to. I did not get. Okay, I'll make sure you get the example. You get the invitation by tonight, okay? So see, here are 1, 2, 3 students, and I think Samir was there. Samir, okay, Samir left the class, I think. I don't know why. Okay, so all of you will put your attendance form, okay? You will fill your attendance form.
last time only 2 students have filled the attendance form. Okay, and whatever you think about the lecture, you have to put your honest comment on that feedback form. Okay, so this is how you're going to go. Okay, I think it is time to say bye bye, and everybody please leave the chat, so leave the meeting and stay safe. Bye bye. Amisha, please leave the class quickly.